technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. Mr. Amit Shah, in an interview, launched a blistering attack on the opposition on the Criminal Netas Bill. He's questioned the opposition on their lessons on morality. He cited his own case and said that he resigned a day after he received summons from the CBI. He was arrested too. The case went on. He got bail as well. But he only took oath for a constitutional post after all charges against him were quashed. He asked, can a prime minister or a chief minister run a government from jail? Rejecting the claims that the bill aims to only target the opposition and opposition-ruled states, the Home Minister said that there are more NDA chief ministers in India. He also revealed that PM Modi himself included his post in the constitutional amendment, unlike former Prime Minister Indira Gandhi, who famously brought 39th Amendment aimed to protect the President, the Vice President, the Prime Minister and the Speaker from judicial review by Indian courts. He in fact went on to slam the Congress party for their double standards. He said that Rahul Gandhi is hugging convicted Lalu for power today, but he only thrashed a 2013 ordinance. गंभीर आरोप होते हैं इन लोगों के खिलाफ, वो उनको साबित करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए इतना वक्त लग जाता है। आप जैसे जो डेमोक्रेसीज हैं, बाकी डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे क्या होता है कि वो हट जाते हैं और फिर वापस आते हैं। यहाँ पे तो जेल में डाल देते हैं। देखिए, जेल में डालने का जो प्रावधान है वो एनडीए सरकार ने नहीं बनाया है, वो सालों से यहाँ चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो आपने कहा कि गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है। पर दोष के ऊपर कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको सीधी तो हो जाए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्गुमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। कई सारे लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई और तुरंत रिवाइव भी हुई, ऊपर से सजा का स्टे मिलने के। मुझे तो विश्वास हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे, मॉरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है। उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर पूछ लो उनको। Now, the anti-graft bills, remember, that showdown around it has escalated after Amit Shah's scathing attack on the Congress as he accused Rahul of double standards. The Congress has hit back at the Home Minister, saying Parliament was misused to divert attention.
the Home Minister is unable to understand that the Parliament cannot be misused for all their purposes to divert. It's a diversionary tactics, and it is an. We all know that against corruption there was an Anna movement, and there was Lokpal formed, there was Lok Ayuta formed. That Lokpal and Lok Ayuta has become toothless now. Therefore, we would like to ask the Home Minister that his political agenda to divert from the real issues, that is vote chori, he has brought this bill without any kind of consultations. Therefore, this is without proper consultations. We as India Alliance will continue to oppose these kind of things, which is anti-democratic. We are going back to the medieval times. Now, we also have a reaction from former Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. Remember, he states, and I quote him, "When the centre sent me to jail by implicating me in a false case as part of a political conspiracy, I ran the government from jail for 160 days. In the last 7 months, the BJP government in Delhi has made Delhi in such a state that today the people of Delhi are remembering the jail government that I ran. At least during that jail government, there was no power cut, water was available, free medicines were available in hospitals and mohalla clinics. Free tests were conducted." He goes on to say that Delhi was not in such a bad state after a single rain. Private schools were not allowed to act arbitrarily and indulge in hooliganism, and that's why what I ran from jail was a better government than the current government. Let me quickly go across to my colleague Mohit Bhatt, who's joining us for more on this. Mohit, this political war of words now continuing with Arvind Kejriwal, the former Delhi Chief Minister, also weighing in, saying that I ran a better government from jail than the current Delhi government. But the question remains, why was he running a government from jail? Well, the reaction of Arvind Kejriwal has come out on Amit Shah's interview. But irony over here is that the government has been saying this, and today also Home Minister Amit Shah stated that it was because of Arvind Kejriwal deciding that he will not resign, he will run the government from the jail when he was jailed in a matter. That is why the government brought in this bill. So the government says that if Arvind Kejriwal would have resigned at that particular time, he would have made somebody else a chief minister. He would have not said that he will run the government from the jail. This law would not have needed. Why this particular law is needed, the government says, because of the morality. The politicians should have the morality. If they are being jailed for a serious crime and they do not get the bail for 30 days, the 31st day, they will have to resign. So this is what Home Minister Amit Shah is saying, and categorically the government, Home Minister have stated that in fact the Prime Minister will also be the part of the bill. Now, Home Minister Amit Shah also raised question on the stand of Rahul Gandhi and Congress. Now, he stated that in 2013, when an ordinance was brought in, perhaps to shield Lalu Prasad Yadav by then Manmohan Singh government, Rahul Gandhi tore that ordinance. Now, he was then for morality. Now his stand has changed. It's just because of 3 victories. So what we see is a major political war of words. The government says that you have to have morality in public life. If you are jailed for more than 30 days, then you have to resign. If you get bail, you can be reinstated on your position. But what we see is that the opposition parties are trying to corner the government, saying that the opposition governments in their respective state will be toppled by using this particular amendment by the That's right, Mohit. So this political war of words continues. It's only going to intensify. I'm going to come back to you for more details, but let's also tell our viewers how the Law Minister has echoed the sentiment of the Home Minister. Speaking exclusively with Times Now, the Law Minister has said that he's speaking with various parties to give names for the JPC. He's also targeted Rahul Gandhi for tearing the ordinance earlier. देखिए, अपोजिशन में विशेष करके राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि कोई भी अच्छा बिल हो, प्रोग्रेसिव लॉ हो, उसका विरोध करना है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। अब ये जो बिल है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, इस बिल में ये प्रावधान है कि ऐसा कोई अपराध जिसमें कानून के तहत सजा 5 साल या उससे अधिक होने वाली हो और वो इसमें लिप्त पाया जाए, कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता, सार्वजनिक नेता, पद पर रहने वाला मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी, और वो जेल चला जाए
कोर्ट उसको जमानत नहीं दे क्योंकि भी आपका अपराध संगीन है। अब ये बताइए मुझे कि क्या जेल से सरकार चलेगी या मंत्री जेल से काम करेगा? गवर्नेंस कैसे होगी? ये तो बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है जो लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए हैं। गृह मंत्री जी ने उसको लोकसभा में पेश किया, राज्यसभा में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाने का जो मोशन है उस मोशन को भी उन्होंने रखा। उस समय भी उन्होंने ये बताया। All right, let's also get your reaction that has come in from former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel on this. गृह मंत्री जी का दिमाग घूम गया है। ये सरकार कुछ भी कर रही है क्योंकि वो दबाव में है, डर दहशत में है और इस कारण से गलत एक के बाद एक गलत कदम उठा रही है। ये सबसे बड़ा गलत कदम है कि आप एक तरफ निर्वाचन आयोग के सदस्यों पे एफआईआर नहीं हो सकता और दूसरे चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक थानेदार, एक कांस्टेबल वो हटा देगा। ये पावर दे रहे हैं आप तो, और इस माध्यम से आप पूरे सरकारों को कंट्रोल करना चाहते हैं।